Hello web developers, welcome back again in our new video of web development series. This is our new and amazing project of digital clock. Let's create this type of digital clock. It is looking like a game box. Okay, gaming clock के जैसा हमारा इंटरफेस दिख रहा है आपको. So let's do this by using VS Code. We are going to use HTML, CSS and JavaScript only. So let's do this. Now we are in VS Code and let's create a folder inside this. यहाँ पे हम नेम लेंगे gaming clock. Okay, gaming clock. This is our folder name and create file inside this index.html. In this index.html, create basic boilerplate of HTML. Press enter and now you see here basic boilerplate of HTML. Change this title into gaming clock. Gaming clock. Okay. Go to this HTML and you can also link your CSS. We will add CSS after creating a CSS file. So now move to body tag. In this body tag, create a class. Inside this is called clock, and let's take one ID also. So ID equal to clock box. Go inside this and create as one tag and with class name. Class नहीं ID लेते हैं. ID time. Time लेंगे हम 00:00:00. Okay. Then button on click function का यूज करेंगे. On click toggle mode switch mode. Okay, this is our button and now run this onto live server. So our program looks like this after HTML. So provide CSS to this also, and after that create a CSS file, style.css. So this is our CSS file and move to HTML file again and link our CSS. So link style.css. Okay, CSS is linked now and import Google fonts. So search on Google fonts Orbitron, जिसका हम यूज करने वाले फॉन्ट का Orbitron. Go inside this and get font, get embedded code. यहाँ पे आपको फॉन्ट वेट सेलेक्ट कर लेना है. अगर वन वैल्यू चाहिए, अगर फुल मैक्स एक्सिस चाहिए तो फुल एक्सिस कर सकते हैं. ओके, इंपोर्ट करेंगे स्टाइल. या तो आप इस फोट को इसको कॉपी कर लीजिए डायरेक्टली. ओके, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए. ओके, सेव दिस एंड रिमूव दिस. ओके, so go to body tag, body margin 0, height 100 vh, display flags, justify content, center, align align item center. Okay, it is aligned to center. And font family Orbitron sans serif. Okay, now it is converted into this font. And you can also take color for this. And let's take background color. Background radial gradient, circle, and these colors. Okay, now it is same as previous one. And we can also take color. Okay, this is our color.
Now move to clock. Now clock, text align, center, and what we can take, border radius. ओके, सबसे पहले हम padding ले लेते हैं. Padding 40 पिक्सल, border radius 25 पिक्सल. अभी आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा करते हैं, बॉक्स border 2 पिक्सल, solid with this color ले लेते हैं. ओके, बॉक्स shadow, how much, 0 0 20 pixel, and this same color, comma 0 0 60 pixel with this color also again. Inset, I think anything is wrong. Animation, glow box, 2 second, infinite, alternate, h1, font size, letter spacing 5 pixel, now button, margin, top 20 pixel, 2040 is more, so let's take a small amount. Background transparent, border 2 pixel, solid, border radius 20 pixel, cursor pointer लेंगे. Okay, now cursor is pointer, and let's take some more thing is color. Font color क्या आएगा? SMS, this one, this is our font color. बॉर्डर रेडियस हमने कुछ ज़्यादा ही ले लिया, 5 पिक्सल लगता है, 5, और it could be 8, और ऐसा करते हैं 10 कर देते हैं इसको फिक्स. ओके, ऐड ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड. बटन होवर हम क्या लेंगे, ऐसे कर देंगे, बैकग्राउंड को हम चेंज कर देंगे इनटू दिस कलर, जो कि हम अपने टेक्स्ट का कलर ले रहे थे उसमें कन्वर्ट कर देंगे, और जो हमारा टेक्स्ट कलर ले रहे थे उसको हम कर देंगे अब ब्लैक. ओके, और बॉक्स शैडो ले लेंगे 0 0 20 पिक्सल, एंड दिस कलर. ओके, नाउ बटन इज SMS previous one, but text and this glow is not SMS previous one.
So now shift to glow animation. Glow animation at the rate keyframes आइडेंटिफायर क्या लेंगे ग्लो बॉक्स फ्रॉम 2 okay that's good now okay now अब हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट इनटू रेड gaming mode now red color and border color is same as this one text shadow this is red and रेड में भी हमें क्या करना है बटन का भी शैडो चेंज करना है और इसका हम शैडो क्या रखेंगे इसका 20 रखते हैं और इसका 40 रख देते हैं ओके ओके रेड के अंदर H1 टैग के अंदर टेक्स्ट शैडो लेंगे इनका हम कलर लेंगे 0 0 10 पिक्सल एंड दिस कलर कॉमा 0 0 20 पिक्सल कॉमा 0 0 40 पिक्सल दिस वन ओके ये ट्रांसफॉर्म होगा बाद में जब हम जेएस का यूज़ करेंगे नाउ मूव टू जेएस फाइल क्रिएट जेएस स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल और इसको भी हम लिंक कर देंगे अपने सी एस एस एच टी एम एल में तो स्क्रिप्ट एस आर सी का यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट डॉट जे एस सेव कर देंगे जो भी अब हम स्क्रिप्ट डॉट जे एस के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर वर्क करने लगेगा ओके फंक्शन अपडेट clock go inside this and const now equal to new date semicolon let h equal to string dot now dot get hours dot pad start with 2 0 semicolon and let's copy all of this stuff for minute and hours minute and second also hours minutes and this one also for seconds and this h into s document
dot get element by id time dot text equal to dollar h colon dollar m colon dollar s semicolon set interval equal to update clock, 1000 update clock function semicolon. ओके तो अपडेट क्लॉक को हमें इक्वल नहीं रखना था सेट इंटरवल में. ओके अपडेट क्लॉक नाउ मूव टू टॉगल मोड. अभी हम जब स्विच करेंगे तो टॉगल मोड काम नहीं करेगा. यहाँ पे स्विच बटन पे क्लिक करेंगे तो टॉगल मोड अभी हमारा वर्क नहीं कर रहा है. ओके नाउ टॉगल नियॉन कलर मोड फंक्शन क्रिएट करेंगे. फंक्शन टॉगल मोड और इनसाइड दिस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. आईडी क्या लेंगे? टॉगल मोड डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल रेड. यहाँ पे हम टॉगल मोड थोड़ी यूज करेंगे. यहाँ पे क्लास क्लॉक बॉक्स यूज करेंगे. क्लॉक बॉक्स क्योंकि हमने स्टाइल में यूज किया था. ओके और रेड के थ्रू अगर हम चाहें तो बटन भी चेंज कर सकते हैं. बटन कलर दिस कलर एंड बॉर्डर. बॉर्डर भी चेंज कर दीजिए. 2 पिक्सल सॉलिड दिस कलर. ये तो ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है तो होवर भी यूज कर लेंगे हम. राइट बटन होवर. होवर में यूज क्या करेंगे? कलर कर देंगे ब्लैक और बॉर्डर चेंज हो रही है. बॉर्डर सेम ही है और बैकग्राउंड कर देंगे दिस वन. ओके और बॉक्स शैडो कर देंगे 0 0 20 पिक्सल. दिस कलर कॉमा 0 inside 0 0 40 पिक्सल and this color. Okay that's fine. Now it is as same as this one. Now switch. It is totally switched now. So this is our digital clock. So you can use this type of clocks for many projects, and for resumes you can also use for front-end development projects. Okay so thanks for watching. Please like, share and subscribe if this video is helpful for you.